Hello guys, I am Dr. Rajesh Thakur with a new poem, with a new video, The Voice of the Rain. This poem has been written by Walt Whitman and it is one of the best poems written by him. The Voice of Rain, this poem is prescribed not only in CBSE courses but also in the universities of this world. This poem, I shall discuss this poem both in English and Hindi together. The Voice of the Rain is a type of conversation between the poet and the reply of the rain itself. So let us proceed ahead with the text. The very beginning line is, "And who art thou, said I, to the soft falling shower. Who art thou? Said I." Here I in the first line, very beginning line, I is the poet. I is the poet. He tells when he sees the rainfall, when it rains, then he asks the rain, "Who art thou?" Said I to the soft falling shower. Soft falling, raining softly, gently. Shower is type of shower, rainfall. So the very beginning is the first line of this poem is the question raised by the poet to the rain. पहली जो पंक्ति है उसमें कवि ने वर्षा से पूछा है कि तुम कौन हो. Who art thou? Art means R-A-R-E. Who art thou? Say to the soft falling shower. When he watches the drizzles or rainfall, then he asks the rain, which is strange to tell, gave me an answer. Gave me an answer, as here translated. The poet is surprised. The poet is surprised at the reply of the rain. So he tells, which is strange to tell. The poet is surprised. Gave me an answer. The poet is surprised that when he asked the question to the rain, that who are you? Then the rain answered him. The rain answered him. And the poet is now going to translate the language, the reply of the rain. I am the poem of the earth, said the voice of the rain. Now mark that. पहले दो लाइन में कवि पहले में तो पूछ रहा है कि तुम कौन हो. फिर जब वर्षा उससे जवाब देती है तो उसे आश्चर्य होता है. और फिर आगे वर्षा ने क्या जवाब दिया उसका एक्सप्लेनेशन कवि कर रहा है. आई एम द पोएम ऑफ द अर्थ. आई एम द पोएम ऑफ अर्थ, said the voice of the rain. I am the poem, mark that, P is capital. Earth, poem of the earth. It means rain has been a substance, has been a topic of discussion of this world. Second meaning is, poem has been, the rainfall has been the subject matter of so many poets. Whether we talk about the Hindi poets or English poets or the poets of any other languages, this rain has been a topic of discussion. So he tells that I am the poem of the earth. That means I am the subject matter for the poet. So I am the poem of the earth, said the voice of the rain. Eternal I rise, impalpable, out of the land and the bottomless sea. He tells, the rain tells that impalpable stands for something that cannot be touched. The poet says that in this line the poet is explaining. In fact, the rain is explaining its mode of origin, the place of origin. It tells that its origination was, its birth is from the land and bottomless sea. वर्षा कहती है कि मैं धरती पर एक कविता हूँ, क्योंकि हमारे बारे में अनेकों कविगण उसको एक्सप्लेन करते आए हैं, लिखते आए हैं. और मैं जहाँ से उत्पन्न होता हूँ, आई राइज, वो कहा नहीं जा सकता, दैट कांट बी टच्ड. और कहाँ से, लैंड और बॉटमलेस सी. You know that the origin of the cloud takes place in the ocean.
When the upper layer of the water is heated by the sunlight, then it is converted into vapor and goes upward, and again by the gust of the air it comes out and it condensed and takes the form of cloud. So it tells up eternal I rise impalpable out of the land and the bottomless sea. कहता मैं धरती से, मैं समुद्र से ऊपर उठता हूँ, मेरी जन्म होती है. Upward to heaven, whence vaguely formed, altogether changed and yet the same. Upward to heaven, heaven means a sky. The vapor from the surface of the sea goes upward to heaven in the sky, whence vaguely formed, altogether changed and yet the same. It tells that, it means that the vapor comes comes to the sky and comes up in the sky. It is condensed and forms what? Clouds, pieces of clouds. But it is also the form of water. ये कह रही है वर्षा कि मैं समुद्र से आसमान में जाता हूं जहां पर मैं एक रूप धारण करता हूं, वेगली, दैट इज नॉट क्लियर, एंड येट द सेम, कहता है मैं वहां पर भी पानी के रूप में ही रहता हूं. I descend to lap the draughts atomies. I descend means come down. I descend to lash the draughts atomies, dust layer of the globe. Globe means earth. Descend means come down. Lap means wash or bathe. Drought means famine or dry places. When it rains, there is the bathing of the earth's surface, which is completely drought or famine or dried. It also falls down tiny particles. It also washes tiny particles and layers of the globe. Layers means earth surface. Layer of the globe means earth surface. वर्षा कहती है कि जब मैं बरसती हूँ तो सूखे जगहों को मैं भिंगा देती हूँ, जो डस्ट पार्टिकल है वह भी धुल जाते हैं, और पृथ्वी का जो सतह है, लेयर है, वह भी पानी से भींग जाता है. And all that in them without me were seeds only, latent, unborn. Again he tells something different, the importance of rain. He tells, and all that in them without me were seeds only, latent. Latent means hidden, unborn. कहता है without my presence, without the rainfall, without water we can't imagine the germination of seeds. वर्षा कहती है कि यदि मैं वर्षा नहीं हूँ, पानी नहीं मिले जमीन पर, तो जो सीड्स हैं, जो किसान अगर बोते हैं तो वैसे ही रह जाएगा, वो जर्मिनेट, इट कांट, दे विल नॉट जर्मिनेट. एंड फॉरएवर बाय डे एंड नाइट आई गिव बैक लाइफ टू माय ओन ओरिजिन. कहता है कि दिस इज ए टाइप ऑफ साइकिल, रेन साइकिल. एंड फॉरएवर आई डे एंड नाइट आई गिव बैक लाइफ टू माय ओन ओरिजिन. It means the position from where it has gone upward. कभी कहना चाहता है कि जिस जगह से मेरी उत्पत्ति होती है, जमीन से, जमीन पर भी कहीं वाटर बॉडी होता है, जैसे तालाब हुए, नदी हुए, तो वहाँ से भी पानी वेपर बनकर ऊपर उठता है और वह बादल में कन्वर्ट होता है. तो यहाँ पर वही चीज़ वो दोहरा रहा है कि एंड फॉर एवर बाई डे एंड नाइट आई गिव बैक लाइफ टू माई ओन ओरिजिन. मैं जहाँ से उत्पन्न होती हूँ वहाँ पर भी दिन और रात फिर से लाइफ प्रदान करती हूँ. द रेन प्रोवाइड्स लाइफ टू द लोकेशन फ्रॉम वेयर इट गेट्स इट्स ओरिजिन एंड मेक प्योर एंड ब्यूटिफाई इट, एंड देन इट ब्यूटिफाई द लोकेशन फ्रॉम वेयर इट कम्स अप. फॉर सॉन्ग, जहाँ पर वर्षा होती है वहाँ पर चारों तरफ हरियाली छा जाती है, इसलिए ब्यूटिफाई शब्द का प्रयोग किया है. And make pure and beautify it for song, issuing from its birthplace after fulfillment, wandering. For song, जहाँ तक कविता की बात है, सॉन्ग की बात है. Issuing from its birthplace after fulfillment, wandering. The poet, the rain explains
its character or nature. When it is formed in the ocean, it goes on wandering from one place to other. This is how it tells. Issuing from its birthplace after fulfillment, wandering. Wandering means bhatakna. Wrecked or unwrecked, duly with love returns. Whether I am ruined or unruined means whether I am used or not used, I again come back to the same location. It means वर्षा जहाँ से होती है, वर्षा होने के बाद फिर उसी जगह पर वो बरस जाती है ज़मीन पर, और फिर ज़मीन से वो भाप बनकर ऊपर उठती है. तो इस तरह से हमने इस पोएम में, इस कविता में ये पढ़े कि किस तरह से वर्षा की उत्पत्ति होती है. समुद्र से, नदी से, थल से ये ऊपर जाती है, किस तरह से वह आगे बढ़ती है, किस तरह से वह ज़मीन पर, बगीचे में, खेत खलिहानों को, सूखे हुए ज़मीन को भिंगाती है, किस तरह से वह वनस्पतियाँ लाती है, और किस तरह से वह चक्र चलता रहता है. दिस साइकिल गोज ऑन रिपीटिंग, दैट देयर इज द ओरिजिन ऑफ रेन एंड अगेन इट कम्स इन द फॉर्म ऑफ वाटर. यह वर्षा पानी से भाप बनकर फिर बादल बनती है, फिर बादल से बरसात होती है, और फिर अगेन यह अगर ज़मीन पर बहुत अधिक वर्षा होती है, बाढ़ होती है, तो फिर यह समुद्र में चली जाती है. इन दिस वे वी हैव कंक्लूडेड दिस पोएम. तो प्यारे दोस्तों, ये वीडियो आपको अच्छा लगे, इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें ताकि मैं नए वीडियो के साथ आपके सामने फिर से उपस्थित हूँ. थैंक यू.